हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जो कि रहेगा 35 वर्ड पर मिनट। और इस 35 वर्ड पर मिनट के डिक्टेशन में डिक्टेशन बोलेंगे, टाइपिंग। सभी स्टूडेंट्स लैपटॉप, अपना कीबोर्ड तैयार कर लें। और जो स्टूडेंट्स शुरू में स्ट्रोक्स बना लेते हैं, सीख लिए हैं, और उनको अब स्पीड पे धीरे धीरे इंक्रीज़ होना है, धीरे धीरे उन्हें स्पीड पकड़नी है, ठीक, तो वो भी लिख सकते हैं। ज़रूर लिखें। आउटलाइंस दी हुई हैं। कैलाश चंद्र की डिक्टेशन है ये, पार्लियामेंट्री डिक्टेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। तो चलिए पहले डिक्टेशन बोलेंगे, उसके बाद ग्रामर रूल एंड इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग, जो इस लेटेस्ट पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न पर जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल्स पूछे जाते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, नाउन, एडवर्ब एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो सभी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 35 वर्ड पर मिनट रहेगा। स्टार्ट। ऑनरेबल मेंबर्स, आई वेलकम यू all and summon you to another year of hard work in the service of the nation. We begin the year on a confident note, having responded with determination to the unforeseen and stupendous challenges of the last 4 years. In the face of continuing rise in prices, the foremost concern of government in 1974 was to impart a measure of stability to the economy. Government adopted a comprehensive strategy to control inflation, and this was put into operation from July 1974. Besides increased mobilization of resources and economies in non-plan expenditure, money supply was restricted through an appropriate monetary policy. A vigorous drive was launched against economic offenses like smuggling, hoarding, and tax evasion, and against spurious units indulging in
Malpractices in scarce material consumer expenditure was restrained by limiting divide in incomes and impounding increases in wages and salaries and a part of additional dearness allowance. Public distribution was strengthened and arrangements were made for adequate import of food grains and essential raw materials and commodities. The annual plan for 1974-75 was revived and outlays on the core sectors were missed to boost production. Vigorous action was also taken to improve utilization of capacity in power plant, rail transport, coal production, steel plants and other public sector industries. This concerted action began to yield results towards the end of September 1974. Despite an unsatisfactory Kharif crop caused by poor rainfall in many states, prices began to fall and there has been a weakening of the inflationary forces. The availability of essential goods has generally improved. The general outlook for the Rabi crop is good. Production in public enterprises has shown a sufficient rise in the first 9 months of this financial year. 14% more electricity is being produced by thermal plants and improvement of 34% of the production of power by DVC plants merits special mention since shortage of power still persists in a number of states. High priority is being given to the completion of power project. About 2 million kilometer of power capacity is being added in 1974 to 75 and another 3 million in the coming year. Production in public enterprises has
shown a significant rise in the first 9 months of this financial year. 14% more electricity is being produced by thermal plants. 10 million tons more coal will be produced this year. The production is going up. Public sector engineering industries are doing remarkably well. More railway wagons are being moved daily. I congratulate workers, farmers, and other sections of the people for the determination, courage, and identity with national purpose shown by them in supporting the government's program of economic stabilization. Government is aware that there is no room for complacency, as there are still sizable imbalances between supply and demand in several important sectors of the economy. The international economic situation is also full of uncertainties. The monetary and fiscal measures and the action against economic offenses will be continued with vigor. Simultaneously, government will intensify measures to remove limitations in the infrastructure and to increase production in vital sectors. In the international sphere, we shall continue to work
for the evolution of a just and viable economic order in cooperation with developing countries as well as developed countries which have shown understanding of our problems. We have been hit hard by the sudden and large increase in the prices of oil, food, and fertilizers. Articles of common consumption have been affected and great hardship has been caused to the people. There is a very heavy draft on foreign exchange. Even a significant increase in our export earnings is not adequate to fill the gap. Special efforts and arrangements are necessary to deal with the problems of oil importing developing countries. Some of the oil exporting countries have helped us in this regard. There has also been some action at the international level, but these measures fall short of the needs of the situation. The severe damage caused to the economies of developing countries has to be recognized and redressed through purposeful cooperative effort on a global scale. We shall continue to take appropriate initiatives in this direction, both through bilateral negotiation and in international forums. In addition to the emphasis on increased production and use of coal, we are going to ahead with oil exploration on an urgent basis. The recent discoveries in the offshore Bombay High
structure are promising. Government has decided that this oil field should be developed to the production stage with the greatest expedition. It is being planned that the first stage of production should begin in 1976 and that in another 4 years the production from this area should go up to 10 million tons. The future outlook for production of oil offshore and onshore area is reassuring. This is understandably some anxiety about the fifth 5-year plan. A plan has a framework and a coherent system of objectives as well as a detailed program indicating targets and the availability of resources. ओके तो ये डिक्टेशन मैक्सिमम 35 to 39 वर्ड पर मिनट 40 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन ये गई है बट 35 to 36 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट डिक्टेशन मोस्ट प्रोबेबली है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ग्रामर रूल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड क्योंकि इस डिक्टेशन के पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है बच्चों का तो ग्रामर रूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इस लेटेस्ट पैटर्न पर तो वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि पहले डायरेक्ट एरर्स पूछ लिए जाते थे बट अब रूल चेंज हो गया है पैटर्न है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसका देखते हैं फर्स्ट लाइन से आई वेलकम यू। तो आई इज़ अ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड वेलकम फॉलोज अ मेन सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा तो वेलकम। ओके ऐसे आई एस किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है ठीक है। यू ऑल ऑब्जेक्टिव केस एंड समन यू टू अनदर ईयर ऑफ हार्ड वर्क। अब ये प्रेपोजिशन ऑफ है उसके बाद हार्ड वर्क ये नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ठीक। हार्ड इज़ अ एडजेक्टिव एंड वर्क इज़ अ नाउन तो ऑफ हार्ड वर्क इन द सर्विस ऑफ नेशन इन द सर्विस ऑफ द नेशन। तो नेशन के पहले आर्टिकल क्योंकि नेशन इज़ अ नाउन और उसके पहले ए एंड द इनमें से कोई आर्टिकल का यूज होगा तो नेशन इज़ अ पर्टिकुलर तो यूज़ करेंगे द क्योंकि इट्स अ यूनिक नेशन इज़ अ नेम एंड वी बिगिन वी क्या है प्लूरल प्रोनाउन ओके। सब्जेक्ट जो नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं तो ये नाउन मेन सब्जेक्ट और इसकी जगह किसी नेम एम की जगह यूज़ किया हुआ तो वी प्रोनाउन है प्रोनाउन मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। फिर फॉलो करेगा बिगिन जो कि प्लूरल वर्ब है बिगिन द ईयर ऑन अ कॉन्फिडेंट। अब ऑन प्रपोजिशन उसके बाद आर्टिकल ए और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट नोट मतलब ये नाउन है। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव एंड नोट इज अ नाउन। तो कॉन्फिडेंट नोट, प्रपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन। ये वाली सीरीज याद कर लीजिए। पहले एडवर्ब, कभी भी अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन का फ्लो ऑफ वर्ड दिया हो तो सबसे पहले एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, पहले वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन। ओके, कभी भी एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, बट एडवर्ब एडवर्ब एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। हैविंग रिस्पॉन्डेड विथ डिटर्मिनेशन। अब हैविंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब, और मेन वर्ब वो भी ईडी वाली, जिसमें भी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है। विथ प्रपोजिशन, डिटर्मिनेशन जो कि नाउन है। नाउन कैसे पहचानेंगे? TION इस शब्द में लगा हुआ है, इस वर्ड में, इसलिए ये नाउन है। किसी भी बच्चे को अगर परेशानी हो नाउन समझने में, TION किसी वर्ड में लगा हो तो वो हमेशा नाउन होता है। ठीक है। टू द अनफॉर्सीन एंड स्टुपेंडस चैलेंजेस। टू द अनफॉर्सीन एंड स्टुपेंडस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो ये कंजक्शन के साथ यूज हुए हैं, एंड के साथ। ठीक है, जुड़े हुए हैं। चैलेंजेस ऑफ द लास्ट ईयर। अब लास्ट 4 years, तो फर्स्ट, लास्ट, ठीक, ऐसा कोई भी वर्ड आए, ऑर्डिनल एंड कोऑर्डिनल कहते हैं ना, तो ऑर्डिनल वाले कोई भी, द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, ऐसे आए तो हमेशा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये सब कोई भी इस तरह सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स आए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, लेकिन इसी की जगह 1, 2, 3 आएगा तो द का यूज़ नहीं होगा उसके आगे। ठीक है। इन द फेस ऑफ कंटिन्यूइंग। अब देखिए, इन द फेस ऑफ, इन प्रपोजिशन द, आर्टिकल, फेस इज अ नाउन, फिर उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ। अब ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। ठीक है। कंटिन्यूइंग राइज, तो ये कंटिन्यूइंग राइजिंग, राइज एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जेरेंड का काम कर रहा है यहाँ पर। इन प्राइजेस द फोरमोस्ट। अब देखिए, फोरमोस्ट, फोरमोस्ट कहीं भी वर्ड आएगा, जैसे नीदरलैंड कहीं वर्ड आएगा तो हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होगा उसके पहले। कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट इन 1974। अब कोई भी ईयर या सन दिया हो उसके पहले इन प्रपोजिशन आता है, कभी ऑन या ऑफ, एट, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, इन प्रपोजिशन आएगा, हमेशा फिक्स्ड है ये। was to impart a measure of stability to the economy। अब a measure of stability of preposition stability क्या है? नाउन है यहाँ पर। ठीक, LITY, to the economy। Government adopted a comprehensive strategy to control inflation। a comprehensive, कॉम्प्रिहेंसिव एक बहुत अच्छा, सरल, गुड एंड बहुत मेंटेन्ड। ठीक, स्ट्रैटेजी टू। अब यहाँ पे टू प्रपोजिशन, कोई भी टू के अलावा कोई भी प्रपोजिशन आई तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ होगा, बट अगर टू प्रपोजिशन आया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, बस वो एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव रहा तो ED का फॉर्म लगा कर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, नाउन के पहले। लेकिन अगर एडजेक्टिव नहीं है, नाउन के पहले नहीं लगा हुआ है, एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होगी टू के बाद। इन्फ्लेशन
to control inflation and this was put into operation. put into मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए किया गया. was put into operation from जुलाई. अब from जुलाई, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी सन हो, कोई भी ईयर हो, तो उसके पहले इन प्रपोजिशन यूज़ होता है. लेकिन अगर कोई ड्यूरेशन दिया हुआ है तो फ्रॉम का यूज़ होगा. ठीक है. बिसाइड्स इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन. अब बिसाइड्स, यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड में कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को. बिसाइड मतलब बगल में. ठीक है. बिसाइड्स एस लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा इसके अलावा. ओके, ये डिफरेंस है. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. ठीक. तो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है और कैसे इसको देखना है, कैसे पहचानना है, ये बताया. ओके. अब देखते हैं इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स. जैसे अनफॉर्सीन एंड स्टूपेंडेंस. अनफॉर्सीन जिसको नहीं देखा गया, स्टूपेंडेंस जो कि इम्पोर्टेंट नहीं था. ठीक है, इसका मतलब. एंड नेक्स्ट स्पेलिंग मोबिलाइजेशन लिख लीजिएगा, रिसोर्सेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिटर्मिनेशन. ठीक है. स्टेबिलिटी, इकोनॉमी. तो ये सभी स्पेलिंग्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव. इसको देख लीजिएगा और जैसे जैसे मैंने ये बताया हुआ है उसी तरह आप इन सभी जैसे को देखिए. जैसे अ विगरस ड्राइव, आ आर्टिकल है. ठीक है. आ एक आर्टिकल है, उसके बाद एडजेक्टिव विगरस बहुत भयानक, तेजी से. ड्राइव मतलब ये नाउन है, ड्राइव. ओके. अ विगरस ड्राइव वॉज लॉन्च्ड. अब ये सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट. ओके. पास्ट में जा रहा है, जो कि पास्ट का वो भी वॉज लॉन्च्ड, वो भी पास्ट का पैसिव वाइज है. वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस. इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्मगलिंग, होर्डिंग, टैक्स इन्वेशन एंड स्पूरियस यूनिट. स्पूरियस की स्पेलिंग देख लीजिए और इसको लिख लीजिए. इसका हिंदी का मतलब होता है नकली, फेक. ओके. SPURIOUS. तो ये पूरा डिक्टेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन रहा. ठीक है. आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, हेल्पफुल भी रहेगा. ओके. डिक्टेशन लिखिए कम से कम 5 टाइम्स तो लिखिए. उसके बाद टाइपिंग वाले टाइपिंग कर लें, शॉर्ट हैंड वाले जो डिक्टेशन लिखते हैं, न्यू बच्चे हैं, वो डिक्टेशन लिख लें. उसके बाद दोनों स्टूडेंट्स टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड वाले ये ग्रामर स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल को ज़रूर देखें. ओके. एंड प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट. टेक केयर. एंड सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें. फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें.